Hello everyone. Today we are going to read about some important concept of our EECA. Here it is from second part, electrical system, electricity billing, electrical load management and maximum demand control, power factor improvement and its benefit, selection and location of capacitor, performance and assessment of power factor capacitors, distribution and transformer losses. Now see introduction to electrical power supply system, our system. So for example, this is generation. How it is generated? Maybe fuel system. It is nuclear. It may be water. It may be coal. And by any other matter, it can. From generation, it will go to transmission. From transmission, distribution will be there, and from distribution, it will go to reach to customer. So from generation, how it will go to transmission? All these things are happen in power plant. From this power plant, supply will go to substation. From substation, from this transmission line on towers, etc. Then again substation will come. Then in distribution power lines are there. Then industry or houses, etc. will go. This is my layout of our power system. Power generation plant. Here the fossil fuels such as coal, oil, natural gas, nuclear gas and falling water, hydro are commonly used for energy sources in the power generating plant. A wide growing variety of unconventional generation technology and fuel have also been developed, including cogeneration, solar energy, wind energy and waste material. Simply in power generation plant, it may be renewable or non-renewable. It may be coal, oil, natural gas, nuclear energy and hydel, etc. And it may be solar, wind, tidal and waste material management, etc. But we have to remember that about 70% of power generation capacity in India is from coal based thermal power plant. This is the main important point. It may come in exam. Producing power from coal we will see, because our 70% is from coal energy. So see, coal supply, pulverizer there, conveyor, then it come to second point. Here small particle will come and it will come to boiler, and boiler then water will be, see this is lagoon, our system will be there. From this is our system, and water purification will be there, water will be there. Then from water here precipitator will be there, it is stuck. Then by the help of steam, what water is boiling, then water से जो steam निकला है, that will help to move the turbine, and turbine here condenser are there for cooling system. Then shaft is connected to the generator, then electricity is generated and it is substation will be there and transmission will be there. This is our principle of thermal power generation. Here in India, the coal based power plant, the overall efficiency ranges from 28% to 38%. It is main important point. Okay. So depending upon the size, operational practice, capacity, when fuels are source of generation, a common term used heat rate. Heat rate क्या है? Which reflect the efficiency of generation. Heat rate is the reflect the efficiency of generation. Heat rate is the heat input in kilocalorie or kilojoule for generating 1 kilowatt hour of electrical output. 1 kilowatt hour or electrical energy being equivalent to 860 kilocalories of thermal energy or 36
00 kilojoules of thermal energy. The heat rate expresses in inverse efficiency of power generation. Then we will see transmission and distribution line. We see the power plant typically produce 50 cycle per second, that is 50 hertz. Okay. Alternating current electricity with between 11 kilovolt to 33 kilovolt. At the power plant side, the three-phase side is stepped up to higher voltage for transmission and cable strong cross country level. See? In transmission side, it may be 11 kilovolt or 33 kilovolt. We will generally step up. First generation है generation जिते ट्रांसमिशन आसवा ऊपर अच्छी ता पूर्वर आम स्टेप अप करवा जैसे स्टेप अप वोल्टेज मे बी 11 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट एट द पावर साइड और थ्री फेज वोल्टेज इज स्टेप्ड अप द हायर वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन ऑन केबल स्ट्रॉन्ग ऑन क्रॉस कंट्री टावर. These are cross country tower. High voltage or extra high voltage transmission in the next stage from power plant transport AC power over very long distance at a voltage like 220 kilovolt or 400 kilovolt. Where the transmission is over 1000 kilovolt, 1000 kilometer, high voltage direct current transmission is also favored to minimize the losses. If our transmission is 1000 kilometer, then HVDC transmission is favored. That's the thing. Substation रे कौन अब substation network at 132 kilovolt, 110 kilovolt, 66 kilovolt or 33 kilovolt constitute the next link toward the end users. Distribution at कौन अब 11 kilovolt, 6.6 kilovolt, 3.3 kilovolt constitute the last link to the consumer. See, solar network ये 132 किलोवोल्ट ये क्या है constitute next link toward the end user. Okay, but distribution रे क्या है last link to the consumer. This is for distribution, this is for sub transmission. Okay, transmission में 11 kilovolt that is this thing which connected directly to the through the transformer depending upon the draw level of service. The transmission and distribution network includes substation. देखो एटा important. Transmission distribution network कौन दरकार include substation, lines, distribution transformer. High voltage transmission कौन? High voltage transmission is used so that smaller, more economical wire size can be employed to carry the lower current to reduce losses. This is point is also important. High voltage transmission कौन भाई use होची? Smaller, more economical wire size हमें use करिबा to employ carry the lower current and reduce the losses. This line is important. Substation containing step down transformer reduce the voltage for distribution to industrial user. देखो सबस्टेशन पाखरे हमर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लागिवो ट्रांसमिशन पाखरे जेतो स्टार्ट होची तम हमर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लागिवो द वोल्टेज इज फर्दर रिड्यूस फॉर कमर्शियल फैसिलिटी नाउ सबस्टेशन पाखरे जो स्टेप डाउन होची हम घर पाखरे पुनी थरे स्टेप डाउन हबो इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी जनरेटेड and as when it needed since the electricity cannot be stored virtually in the system. There is no difference between a transmission line and distribution line except for the voltage level and power handling capacity. This is very important line. It may come in exam. There is no difference between transmission line and distribution line except the voltage level and power handling capacity. Power handling capacity and
voltage level is high in transmission line and low in distribution. Transmission line are usually capable of transmitting large quantities of electrical energy over great distances. They operate at high voltages. Distribution line can carry limited quantities power over short distance. Voltage drop in the line are in relation to the resistance and reactance of the line, length and the current run. This is important. आमर गोटे लाइन रो वोल्टेज ड्रॉप का सहित जे रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ऑफ द लाइन लेंथ एंड द करंट रन ओवर डिफरेंट फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ पावर हैंडलिंग एंड lower the voltage, higher the current run and higher the voltage drop. See, this is second point. नेक्स्ट पॉइंट है सेम पावर हैंडलिंग पाए जदि lower the voltage and higher the current hobo, then higher the voltage drop hobo. The current run is inversely proportional to the voltage level of the same condition. Current run क्या सहित inversely proportional to the voltage level for the same quantity of power handled. Okay, that's the thing. The power loss ये सब हमरो मु जोड़ा येलो लाइन देछि से सब हमरो objective रे आसी पारे. So while watching the video you have to write that thing. Okay. The power loss in line is proportional to the resistance and square of the current. When I say P equal to I square R हमें जानते this thing is telling P equal to I square R. Higher voltage transmission and distribution thus would to minimize the line voltage drop in the ratio of voltage and the line power losses is the ratio of square of the voltage. For instance, if distribution of the power is raised from 11 kilovolt to 33 kilovolt, the voltage drop would be lower by a factor of 1 by 3 and the line losses would be a factor of 1 by 3 square. Lower the voltage transmission and distribution are also called bigger size conductor on account of current handling capacity. What it is tell that if higher voltage transmission and distribution thus would help to minimize the line voltage drop in the ratio of voltage and the line power loss in the ratio of square of the voltages. जदि हमरो distribution रो power टा 11 kilovolt दिला तबरे 33 kilovolt होला तो कौन हबो the voltage drop would be lower by lower हबो factor of 1 by 3 because it is increased 3 times. So voltage drop would be lower by 1 by 3 times and line loss कौन हबो the line loss would be lower by a factor of 1 by 3 square, that is 1 by 9. Okay, that's the thing. This line is very, very important. Lower voltage transmission and distribution also calls for bigger size conductor on account for current handling capacity needed. Okay, that's the thing. Then cascade efficiency. Cascade means one's output is connected to another's input. Okay. The primary function of a transmission and distribution equipment is to transfer power economically and reliably from one location to another location. Our main hochi transfer power economically and reliably from one location to another. This is the main point. The conductor in the form of wire and cable strung on tower and pole carry high voltages AC electric current. A large number of copper or aluminum conductor are used to form the transmission path. हमें generally copper and aluminum use करते transmission path use करते. The resistance of the long distance transmission conductor is to minimize. We have to minimize the resistance in long distance. So what it will be for I square R losses, to minimize the I square R losses. Okay. I square R losses को minimize करिया पाए
आमे रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमाइज आई स्क्वायर लॉसेस को कमेवा पाए कैपेसिटर आर यूज्ड टू करेक्ट पावर फैक्टर by causing current lead to the voltage. Your main point is that the thing. आमर जनरली कैपेसिटर कौन पर यूज होची पावर फैक्टर करेक्शन पर यूज होची तमे बुझो कि न बुझो जा भी हो तुम माप कैपेसिटर आर यूज टू करेक्ट पावर फैक्टर करेक्शन हाउ because current to lead the voltage causing the current lead to the voltage here current leads the voltage so our power factor improvement will be there so we are using capacitor to improve the power factor when the AC current are kept in phase with the voltage operating efficiency of the system maintained at high level जते बेले हमर करंट एसी रे करंट in phase with voltage थिबो से टाइम रे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मेंटेन हाई लेवल हमर करंट आ वोल्टेज जदी सेम फेज रे थाउची तबला हमर एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम हाई थाउची बट हमें जनरली इंडक्टर यूज करछे लेगिंग हे जाउची से लेगिंग टाको हमें पाखु आनिया पई किछि लीडिंग जदी यूज करबा दैट मे बी नियर टू यूनिटी होबो सो हमर एफिशिएंसी इंक्रीज होबो सेहिति पई हमें कैपेसिटर यूज करछे ओके अंडरस्टूड सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस आर सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस कोन स्विचेस रिलेस सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूजेस मींस हमें गोटे जिंस चालुची करंट चालुची वी डोंट वांट दैट थिंग सो हाउ वी विल ब्रेक वी कैन ब्रेक बाय स्विचेस स्विच को ऑफ कर देले हमर करंट आसीबनी रिले रिले ट्रिगर हे जिवो सर्किट ब्रेकर भी ओपन हे जिवो एंड फ्यूजेस दैट द थिंग इज सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस एटा होची एग्जांपल ऑफ सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस okay each of these devices are designed to carry interrupt certain level of current making and breaking of the current carrying conductor in the transmission path with minimum arcing is one of the most important characteristic device making and breaking of the current this one is important making and breaking the current carrying conductor in the transmission path with minimum arcing मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट गोटे कंडक्टर रो कि रिले रो मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंटा ट्रांसमिशन पाथ रे मिनिमम आर्किंग थिबो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बोले धरा जाए हला मिनिमम आर्किंग थिबो मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट कंडक्टरटा मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट ऑफ ए कंडक्टर ने ट्रांसमिशन पाथ विथ द मिनिमम आर्किंग इज मोस्ट तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट ऑफ द कंडक्टर शुड बी मिनिमम Relay senses abnormal voltages, current and frequency and operate to protect the system. Relay कोनडा relay होची गोटे protecting device हम circuit रो से कोन abnormal voltage कोन मे बी अंडर वोल्टेज हे परिबो मे बी ओवर वोल्टेज हे परिबो सेडा करंट को भी देखोची ओवर करंट माने फ्रीक्वेंसी ऑपरेट जते बळो हमर गोटे सिस्टम रे किछि abnormality आसुची से सेडा को प्रोटेक्ट करची केमदि प्रोटेक्ट करची सेडा को से सेंस पठौची मोर सर्किट ब्रेकर को एंड सर्किट ब्रेकर मोर से पार्ट को सर्किट रु सेडा को अलगा कर दोचे सेडा होची रिले रो काम ट्रांसफार्मर आर प्लेस इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन थ्रू आउट द सिस्टम टू मिनिमाइज द पावर लॉसेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम they are used to change the voltage level from low to high in step up transformer and from high to low in step down units okay this one is very easy the power sources to end user energy efficiency link is a key factor which influences the energy input the source of the supply if we consider the electricity flow from generation to the user in terms of cascade energy efficiency typical cascade efficiency profile from generation 11 kilo user industry will as below asebo be cascade energy efficiency
हाँ फास्ट हूँ गोटे पावर सिस्टम रो फास्ट हूँ जनरेशन जनरेशन माने आमर सिस्टम आमर एनर्जी जनरेट है मन कर जनरेशन रो एफिशिएंसी न्यू वन तो तार एफिशिएंसी रेंजेस फ्रॉम 28 to 35% with respect to the size of the thermal plant and capacity utilization. This is very important. तापर आसला कौन आमर जनरेशन पाखे आमर कौन हम स्टेप अप हम स्टेप अप स्टेशन जार एफिशिएंसी होची N2 न्यू 2 स्टेप अप कौन हम 400 to 800 किलोवोल्ट enable extra high voltage transmission the maximum losses 0.5% and efficiency होची आर losses होची 0.5% efficiency होची 99.5%. ओके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड स्टेशन कौन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिशन ऑफ सबस्टेशन कौन 400 किलोवोल्ट टू 800 किलोवोल्ट एटी मैक्सिमम लॉसेस कौन 1% एफिशिएंसी होची 99%. तापर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम एंड स्टेशन न्यू 4 हियर सबस्टेशन कौन 220 टू 400 किलोवोल्ट एनवराइज्ड मैक्सिमम लॉसेस कौन ये मैक्सिमम लॉसेस 2.5% एफिशिएंसी केते 97.5%. तापर आसला हमर सब ट्रांसमिशन न्यू 5 सबस्टेशन कौन 66 टू 132 किलोवोल्ट लॉसेस कौन 4% एफिशिएंसी 96%. तापर डिस्ट्रीब्यूशन रे कौन हम न्यू 6 स्टेप डाउन एट लेवल ऑफ 11 टू 33 किलोवोल्ट एनर्जी लॉसेस 0.5% एफिशिएंसी होची 99.5%. हियर वी हैव टू रिमेंबर कोडी केते लॉसेस होची केते एफिशिएंसी होची हम मन रखिया पड़ियो ए भितरु गोटे की दुईटा क्वेश्चन आसी पारे. प्राइमरी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन न्यू 7 डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनल लिंक ऑफ द एंड यूजर कौन 11 टू 33 किलोवोल्ट एनवरेज लॉसेस ऑफ मैक्सिमम कौन 5% एफिशिएंसी इज 95%. देन एंड यूजर कौन एटा होची कैस्केड एफिशिएंसी कौन जति की एफिशिएंसी थिबो सब आका मल्टीप्लाई कर दबो. एटा होची हमर कैस्केड एफिशिएंसी कौन मोर फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5% सेकंड 10% थर्ड 30% एमती सब कैस्केड एफिशिएंसी माने वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द थिंग दिस इज वेरी इजी. सो इट मे बी कॉमन प्रॉब्लम रे भी आसी परिबो. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग लॉन्ग क्वेश्चन रे भी आसी परिबो कैस्केड एफिशिएंसी कौन हियर देछि देखो the cascade efficiency of the transmission distribution system of the power plant of end user is 87%. केमती हला सब एक मल्टीप्लाई कर देला. ओके दिस इज वेरी important. Industrial end user who are end user we are end user. Okay at the industrial end user premises again the plant network element like transformer and receiving substation switch gears lines and cable load break switches capacitor causes losses which affect the input received energy. आम घर पाखरे भी ए सब एक लॉसेस होचे सेति भाई एडा इनपुट एनर्जी को रिसीव करछे अगेन एफिशिएंसी में भी डिक्रीज हेबे. हाउ द लॉसेस इन द सोर्स सिस्टम आर more than unavoidable. The typical single line diagram of electrical distribution system in the figures देखो see एटा होची हमर वन लाइन डायग्राम इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल लाइन डायग्राम कोन कोडी अछि हमर देखो एटी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइंग होची तापर ट्राइस्टिक मीटर लाउची ए पाखरे कोन हो गोटे मीटर लागिवो एटा कोन हो 11 किलो वोल्ट टू 450 वोल्ट ट्रांसफार्मर लागला एटा हमर आम एंड रे हला तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर गोटे लागिला ट्रांसफार्मर को एमती हमें करि परिबा राउंड दीटा ओके
दुईटा राउंड आम मेजर करा यहाँ हूँ देख ये जो लाइन गुड़ाक हूँ बस बार यहाँ हूँ ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लाइक दैट देख फास्ट कौन है मीटरिंग है ये फास्ट एम लिखाई माने ये मीटरिंग है तापर ये हूँ ट्रांसफॉर्मर लगे ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी हूँ 98 to 99%। डीजी सेट जार ये सब आसीना से डीजी सेट लगे डीजेल जनरेटर सेट लगे आम डीजी सेट लगौचे से जब सप्लाई आसापर ये मीटरिंग बस तापर यहाँ गोटे बस बार हूँ कनेक्टिंग पॉइंट जो सब किसी कनेक्शन हो गोटे पॉइंट पर गोटे लाइन से सब किसी आम नहीं पार देख जमी आमर 3 पिन केबल एम आम नहीं पार्चे गोटे से टाइप रो देन तापर आमर आसो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस देख ये जगह डिस्ट्रीब्यूशन तापर फीडर कैपेसिटी ये जगह आमर फीडर रही मीटरिंग 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 ये जगह आम फीडर कैपेसिटर रहा ये कैपेसिटर रहा कैपेसिटर कौन टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर तापर आमर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन पाखे कौन हम आमर ये लगिला स्टेप मोटर गुड़ाक लगिला से मोटर पाखे दैट मोटर कौन हम मे बी फैन और बॉयलर मोटर मे बी पंप आरसीएम लाइटिंग ये सब लगिला लाइटिंग एंड हीटिंग लगिला ये मोटर एफिशिएंसी हम तापर एटा पार्ट हूँ ये तल पार्ट हूँ कंप्लीटली मेकानिकल ओके सो इट इज इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल लाइन डायग्राम देख ए मीटरिंग माने जो एमएम लिखाई से आमर मीटरिंग कराऊँ मीटरिंग माने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर जो सी लिखा से गोटे कैपेसिटर कराऊँ द थिंग देख ये कौन है पूरा यहाँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम अरे बट आम पाखे मेकानिकल सिस्टम देख यहाँ हूँ गोटे पॉपुलर स्लोगान 1 यूनिट सेव्ड इक्वल टू 2 एनर्जी जनरेटेड you have to remember this thing what is the popular slogan based on this thing so you will tell 1 unit saved equal to 2 unit generated after power generation at the plant it is transmitted and distributed over a wide network the standard technical losses are around 70% in India so efficiency kono 83% roibo but the figures for many of the states so transmission distribution losses ranging from 17% to 50%. All these may not constitute technical losses since on meter and privilege are accounted in the losses. On meter एटा हमर 83% होची मात्र लॉसेस 17 टू 50% काहे लॉसेस होची एटी लॉसेस ता हमर केते होबा कथा हमर 23% होबा कथा कि आउ सब कहीं लॉसेस होची माने केते हुक पके कि नौचंदी आ पाइल फ्रीज करी नौचंदी सेटा लॉसेस व्हेन द पावर रीचेस टू द इंडस्ट्री इट मीन्स द ट्रांसफॉर्मर अगेन जदी पावर इंडस्ट्री को मीट जीवो से ट्रांसफॉर्मर को आउथरे हबो से ट्रांसफॉर्मर हम स्टेप डाउन हबो the energy efficiency of the transformer is generally very high the energy efficiency of the transformer is generally very high we know that next it goes to the motor through internal plant distribution network a typically distribution network efficiency including transformer is this one is important and motor efficiency about 90% another 30% in the loss in the mechanical system which is including coupling and driving system another a drain though here cascade efficiency is 50% okay hence 1 unit saved at the end user is equivalent to 2 units in the power plant okay understood generally आमर एफिशिएंसी जहाँ भी करके 50% आस जाउछे सो 1 यूनिट सेव्ड इक्वल टू 2 यूनिट जनरेटेड इक्वल हो जाउछे दिस द थिंग इफ एनी वांटेड प्रूव 1 यूनिट सेव्ड इक्वल टू 2 यूनिट जनरेटेड so you have to explain this thing now electricity billing